dear students, today I'm going to continue Chapter 8 of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, Session number 7 of the Sources of Business Finance. We already discussed the different points in the sources of business finance, starting with the introduction, then after the meaning and some of the main and importance of the sources of finance. But the main part, that was the different type of the sources on the basis of the owner's fund and borrowed fund. I started the owner's fund with the help of the two different sources, two different funds, that is the capital, equity share capital and preference share capital. Both the particular sources were discussed in detail with the meaning and its characteristics. Today, the point of the conclusion of these 2 points, that is the equity share and preference share, will be help of the difference. So, let's start the difference between equity share and preference share. See, you can add some other points here. Right? Here the main points are covered as per the book, but you can write down the meaning of this one. Right? You can write down the different of the things related to the directors. Right? It will be there, but you can write more and more points. So these 7 points are enough, right, for the studies. Let's start with the first one: compulsory. So, as a part of equity share and preference share, let us start the difference. In equity share, it is compulsory to issue equity shares by each company. So, whenever this type of the equity shares are there, that means if you are starting or establishing one company, it is compulsory for every company to issue this type of the equity shares. तो ये शेयर्स आपको इश्यू करने ही पड़ेंगे if you are establishing a company, right? ये preference share, simple thing. It is not compulsory to issue preference share by each company. So if you want to start the company, you have to issue equity share, but it is not compulsory. There is no need to issue the preference share, right? If there is no need of money or finance. अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, अगर नहीं है तो यू कैन रन योर कंपनी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्विटी शेयर, बिकॉज इट इज द मेन टाइप ऑफ दिस शेयर्स. वी कैन से दिस टाइप ऑफ द शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स. वो भी पॉइंट यहाँ अलग से आप ऐड कर सकते हैं. सो यहाँ पर इक्विटी शेयर कंपल्सरी इशू करना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर कंपल्सरी इशू करना नहीं पड़ता है. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट इज रेट ऑफ डिविडेंड. As you know, these equity shares are compulsory to issue, यानी कि ये शेयर्स उन लोगों के लिए है जो ट्रू ओनर्स और ट्रूली इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो उनका रेट जो होता है, रेट ऑफ डिविडेंड, वो फिक्स नहीं होता है. So keep in mind, it is not fixed. So in equity shares, the rate of dividend is not fixed. Dividend, that is a return on the investment which are made by the investment in the equity shares. उसके ऊपर जो भी रिवॉर्ड या रिटर्न मिलेगा वो डिविडेंड है. यहाँ इन लोगों के लिए वो कंपल्सरी नहीं है, राइट? लेकिन रेट कई बार दिया जाता है डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. अगर ज़्यादा भी प्रॉफिट होता है तो कंपल्सरी वो लोग नहीं देते, डिपेंड अपॉन द कंपनीज पॉलिसी. लेकिन रेट फिक्स नहीं है. लेकिन हियर इन अ पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर, यस, rate of dividend is fixed. So यहाँ those who will invest in the preference share, they will get a fixed rate return or reward at the end of the year in the sense of the dividend. दोनों में रिवॉर्ड तो सेम है डिविडेंड, लेकिन यहाँ रेट फिक्स नहीं है, यहाँ पर रेट फिक्स है. नेक्स्ट वन थर्ड, that is the rights. In equity share, different type of the rights are given. That is the main thing. प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं है. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको मालूम है. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, ट्रू ओनर्स, रियल ओनर्स विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द राइट्स, बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल नॉट गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द राइट्स. लेट्स सी व्हिच टाइप ऑफ द राइट्स आर देयर इन द इक्विटी शेयर्स. देयर इज अ राइट टू अटेंड company's meeting. Every year annual general meeting is there. In that meeting, the right is given to the equity share holders to attend the meeting. आप उसमें बैठ सकते हैं. The first. Second one, to cast vote. Equity share holders, those who are equity shares, they can cast vote. And third one, they can elect the managers, right? Or they can make them, or they can give the vote for the election
for the selection for the different type of the policy changing, or they can help to change the policy by giving votes. So ये सब फैसिलिटीज राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी राइट दिया नहीं जाता, लेकिन उनको एक ही राइट है, हैज अ राइट टू वोट ओनली इन मैटर्स which are related to the interest। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट में जो भी डिसीजंस लेने जाने वाला है उसमें वो वोट कर सकते हैं। सो सिंपल थिंग इज दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन वोट, राइट, दे कैन अटेंड द कंपनीज मीटिंग एंड दे कैन इलेक्ट द मैनेजर्स सॉरी, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ओनली द राइट्स गिवन टू गिव वोट रिलेटेड टू द मैटर्स, उनका जो मैटर्स होता है उनमें वोट दे सकते हैं। Next one, fourth one is this is the factor क्या है, you know, equity shareholders as per the discussion, risk is high, proportion of risk is more or high in the equity share. The reason is that they will get the last benefit in the capital when the company is under liquidation. They will maybe not get the dividend in companies under a loss, 100% will not get the dividend in companies under loss, or sometimes they will get the less dividend, okay, but the proportion in the preference share of risk is less. So you can easily invest in preference share, but some of the rights are not given to you. So most of the people are choosing equity share, people that is investors, but risk is very high, less. So more and less risk is there. Fifth one, that is the investors. Let's see what is the situation of investors in equity shares and preference shares. These shares, equity shares, are preferred more by investors who wish to take risk. तो जिनको रिस्क ज़्यादा लेना है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड स्पेक्यूलेट और गैम्बल शेयर्स। द सिंपल थिंग है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन इट इज अलाउड इन आवर कंट्री टू स्पेक्यूलेट द शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंजेस, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। तो दोज इन्वेस्टर्स हु want to take risk, they prefer this type of shares, and also those who want to make the particular buying selling on a speculation based on the gambling base, they can purchase the shares, right? तो यहाँ पर देखा जाए तो जो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा कमाना है ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट प्राइस, जो रिकॉग्नाइज मार्केट में प्लस माइनस इंक्रीज डिक्रीज होता है उसको कमाना, स्पेकुलेशन करना है, वो इन्वेस्ट करेंगे, और अदर्स वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, तो हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। Here preferences, these shares are preferred mostly on choice, they can see preferred by such investors who wish to get fixed income. Characteristics में ये पॉइंट कवर हुआ था, you know, those who want to take the benefit of fixed income, they can invest in preferences, and also security of capital. उनका कैपिटल लॉन्ग टाइम के लिए सिक्योर है, they will get the benefit of the regular income. तो सिंपल थिंग इज दैट preference share or preference share holders are there, those who want to take or those who want to invest in this type of business, they will get the benefit of the fixed income and the security of capital. So that's the simple type of the difference between them. Next sixth one market price. Speculation है, so simply market price will increase or decrease. So equity share, there is increase decrease in market price of share. The reason is that speculation. Most of the investors are choosing this particular equity share to take the benefit of market price. शायद कंपनी का कोई पॉजिटिव न्यूज होगा, अगर मार्केट प्राइस डायरेक्टली इंक्रीज होता है, कंपनी को कोई प्रोजेक्ट मिला, कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया, राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, सो कंपनीज मार्केट प्राइस विल इंक्रीज, एंड समटाइम्स द लिमिटेशंस आर देयर, समटाइम्स दे विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोजेक्ट्स और अदर थिंग्स। प्रोजेक्ट्स वापस भी लिया जाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से हिसाब से उनको प्रोजेक्ट वापस करना पड़ता है, लॉस हो जाता है, कोई शायद कंपनी में कुछ नेचुरल कैलामिटीज की वजह से प्रॉब्लम होता है, कुछ मैनमेड कैलामिटीज हो जाती है, मैनमेड रिस्क हो जाता है, कोशिश हो जाता है, आपको मालूम है सब लेना सीखा, तो वो सब के लिए शायद ये
ये नहीं आता होगा, लेकिन कैलेंडर्स के बारे में आपको मालूम है, तो बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस विल इंक्रीज ऑफ व्हीकल्स। दैट्स इट। हियर इन प्रेफरेंसेस proportionately the price of a share remains fixed in the sense of the proportion, mostly in the sense of the particular company's preference, the price is fixed, उसमें कुछ increase decrease नहीं होता है, right? Simple, no increase decrease in the market price, simple, proportionately the price is same fixed, but sometimes the fixed rate is increased, right? Related to the dividend, यहाँ जो उनको डिविडेंड मिलता है इसका रेट फिक्स है, लेकिन जब ये रेट शायद इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस ऑफ द कंपनीज पॉलिसीज, तब उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब होगा तब ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम और 2 टाइम इन अ लाइफ टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होगा। So simple, no increase in the price of the shares of the preferences. Next and last difference between equity share and preference share, that is addition in capital. Simple, you can add the capital in equity or preference, but how? In this type of shares, capital can be raised. You can increase and raise the capital by right share. Company को पैसों की जरूरत है, so they can give the particular type of the right shares to the equity shareholders. तो उनके जो existing shareholders हैं उनको पहले preference दिया जाता है to purchase the once again the shares that is right shares. उसके बाद नए investors create किया जाता है, so that is the right shares and bonus shares. bonus shares on the basis of the company's income profit के हिसाब से उसको split किया जाता है और bonus दिया जाता है. In accountancy later on in the college level you will get the different type of decisions related to this raise capital through right and bonus. लेकिन if company is immediately in need of the money, they can raise the shares or they can increase their capital or capitalization by right issues or by bonus shares. But the benefit is not there in preference share. Simple, in this type of shares, in preference shares or in this type of the capital cannot be raised. यहाँ आप कोई भी अलग टाइप का कैपिटल रेस्ट नहीं कर सकते एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड, जो है उसको ही रखना है. यू कैन चेंज द रेट समटाइम्स ऑफ द पर्टिकुलर डिविडेंड, बट कैपिटल रेस नहीं होता. ये तो सिर्फ साथ में, उसमें हम बढ़ा भी सकते हैं और आप मिनिमम ऐड कर सकते हो इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस है कैपिटल का. कई अलग अलग पॉइंट्स जो हमने कवर किए, लिक्विडेशन का पॉइंट डाल सकते हो, राइट, रीपेमेंट का पॉइंट डाल सकते हो. ये पॉइंट डाल के आपको सारी ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी दे सकते, लेकिन एज पर द पर्टिकुलर 5 मार्क्स you can write 5 or 6 that is the good thing. That's the end of the session. From next session I will start the third owner's capital, that is the retained profit or flowing back of profit. Then after I will complete the particular type owner's one, then after borrow capital will start. Thank you.